This today topic is a factor affecting salting, type of salted fish, and spoilage of salted fish. So all these three topics today I will cover. So before starting this factor affecting salting, type of salted fish, spoilage of salted fish. So first we will cover this factor affecting salting process and quality of the product. So these are the some factors: source, that means source of salt; composition, that means composition of salt; and quality of salt. Then nature of the fish also affects the salting process. Then salt concentration in brine and temperature. So these four factors is affecting the salting process. We will go one by one. Coming to the source, as we know, the pure common salt is the NaCl, sodium chloride, and commercial common salt may contain certain impurities, and their level, it depends on the kinds of salt or source of salt and their method of production. Video I have not on. So their impurities in the salt, it depends upon the source of salt, from where it has been manufactured, and the level of the production. So the most common type of salt that we are using in salting is the solar salt and rock salt. Solar salt and rock salt. What is solar salt? What is solar salt? What is solar salt? What is solar salt? हेलो what is solar salt? सर समुद्र से जो निकालते हैं उसके बाद जो धूप में जो सूखता है Correct. Okay, correct. That means sea water we are evaporating under the sun, or salt lake water we are evaporating under the sun, that is called as solar salt. Like that, rock salt is there. A rock salt we are manufacturing from the underground deposits. So that is the solar salt or rock salt. Their impurity depends which kinds and level of the production, how we are manufacturing. So this is the source. Now coming to the chemical composition of the salt. This suitability of salt for fish curing, it depends on its chemical composition, microbial purity, and physical characteristics. Chemical composition, microbial purity, and physical characteristics. So these three is important. Then commercial salt contain NaCl, generally ranging from 80 to 99%. जो commercial salt होते हैं उसमें NaCl का percentage जो है 80 to 99% होते हैं. But they may contain chloride and sulfates of calcium. That means calcium chloride, calcium sulfates, magnesium chloride, magnesium sulfate, then sodium sulfate, sodium carbonate, and traces of copper and iron as a chemical impurities. So these are the impurities generally present in the salt. And how this impurity playing a role means how it will affect the salting process, what it may cause to our product, how means how it will affect in the quality of the products, this impurity. So it will come, we will cover. So calcium and magnesium ion from impure salt, it binds with the protein and form a barrier. जो कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाता है. अगर वो प्रोटीन से बाइंड हो जाता है तो NaCl जो हमारा सॉल्ट में Na+ है, वो सोडियम
सोडियम को बाइंड करने से मींस पेनिट्रेट करने से प्रिवेंट करता है, so it will form a barrier. That's why the penetration of salt into the fish will be slower. That means it will delay the penetration of salt into the fish. At higher concentration, calcium and magnesium will lead to excessive bitterness and brittleness. This is important. At lower concentration में it gives a desirable properties to the product, but at higher concentration this calcium and magnesium ions will lead to excessive bitterness and brittleness. Then multivalent ions, copper and iron, or traces of copper or iron, it catalyzes the development of brown or yellow discoloration in the salted fish. So it may enhance this copper ion or iron, this multivalent copper or iron, it catalyzes the development of brown or yellow discoloration in the salted fish. So कैसा होना चाहिए salt जो हम यूज करेंगे? तो salt used in fish curry should have at least 95% NaCl. जो salt हम यूज करेंगे salting के लिए, उसमें NaCl का परसेंटेज salt में 95% होना चाहिए, and it should be free from halophilic bacteria and as dry as possible. हेलोफिलिक बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगेन इट में लीड्स टू स्पॉइलेज, और जितना हो सके ड्राई सॉल्ट होना चाहिए. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ सॉल्ट दैट वी हैव टू यूज. देन माइक्रोबियल क्वालिटी. सो सॉल्ट यूज्ड शुड बी फ्री फ्रॉम हेलोफिलिक बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स. जो सॉल्ट हम यूज करेंगे सॉल्टिंग के लिए, that should be free from halophilic bacteria and mold, otherwise it may leads to cause pink or red and dun spoilage in the product. अगर हेलोफिलिक बैक्टीरिया होगा तो पिंक और रेड स्पॉइलेज होगा सॉल्टेड फिश में, अगर मोल्ड्स है तो इट में कॉज डन स्पॉइलेज. सो स्पॉइलेज में ये हमारा टॉपिक आएंगे, कवर करेंगे. सो माइक्रोबियल क्वालिटी और माइक्रोबियल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट का क्वालिटी कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फ्री फ्रॉम हेलोफिलिक बैक्टीरिया एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम मोल्ड, हेलोफिलिक मोल्ड. नहीं तो क्या होगा? पिंक, रेड और डन स्पॉइलेज हमारे प्रोडक्ट में वो कॉज करेगा. देन क्रिस्टल साइज. जो भी सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं, जो क्रिस्टल साइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मींस फैक्टर मींस है हमारा सॉल्टिंग प्रोसेस के लिए. So the size of salt crystals greatly influence the salting time. अगर बड़ा ढेला वाला जो है large coarse crystals if we are using, it may affects the salting process. अगर too fine crystal है, एक तो हो गया बड़ा क्रिस्टल और एक बहुत ही fine crystals we are using, then what will happen? It may cause excessive dehydration on the surface of the fish. So क्या होगा? surface of the fish जो होगा वो hard हो जाएगा. अगर hard हो जाएगा तो again जो हम salt डालेंगे तो वो salt का further penetration नहीं होगा. That's why it may cause salt burn. Salt burn. Too fine crystals if we are using, it may cause excessive dehydration on the surface of the fish and leads to hardness on the surface of the fish. It may prevent the further penetration of the salt into the fish and causing the salt burn. That's why the size of salt crystal chosen shall be one that will ensure faster rate of dissolution. That's why it should be a proper crystal size, so that whatever salts we are using, it may directly penetrate in our product and it may not cause a salt burn. So बरड क्रिस्टल लेने से भी खराब है और एकदम फाइन क्रिस्टल ले रहे हैं वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है. तो दिस इज अ क्रिस्टल साइज. हेलो सर. बोलो यार. सेल वी वन मतलब वैल्यू वन होना चाहिए साइज क्रिस्टल का साइज का. क्या है? हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है सेल वी वन, वैल्यू वन होना चाहिए क्रिस्टल का 1 mm का. नहीं यार,
तो इसका नहीं, क्या नहीं। मतलब है? The size of salt crystal chosen shall be one that will ensure a faster rate of, मतलब जो size of salt crystal जो हम ले रहे हैं वो वैसा होना चाहिए जो हमें इंश्योर करे faster rate of dissolution. That means salt जो है easily means penetrate करे हमारे प्रोडक्ट में. ये क्वालिटी ऑफ सॉल्ट है क्रिस्टल. डोंट कंफ्यूज वन. ये बोल रहा है वन दैट मींस मतलब सर सो दैट. हाँ, लाइक दैट ना. यस सर. ठीक है. यस सर. ओके. देन नेचर ऑफ द फिश, इट आल्सो अफेक्ट्स द सॉल्टिंग प्रोसेस. अगर फ्रोजन एंड थॉड फिश हम ले रहे हैं तो इट अलाउ ग्रेटर परमेबिलिटी ऑफ सॉल्ट इनटू द फ्लैश. अगर फ्रोजन फिश ले रहे हैं और थॉड फिश, फ्रोजन एंड थॉड फिश, फ्रोजन है तो डेफिनेटली वी हैव टू थॉ एंड वी हैव टू डू सॉल्टिंग. सो इट अलाउ ग्रेटर परमेबिलिटी ऑफ द सॉल्ट. सो यहाँ पे फास्टर रेट ऑफ सॉल्ट पेनिट्रेशन होगा, लेसर टाइम में लगेगा हमें सॉल्टिंग में. दूसरा है अगर फिश फैटी है, फैटी फिश है और रिगर फिश है. सो दिस फैटी फिश और रिगर फिश, here again the salt penetration will be slower compared to lean fish and rigor resolved fish. Understood? Fatty fish, अगर rigor fatty fish और rigor fish है तो salt penetration हमारा slower होगा compared to lean fish and rigor resolved fish. अगर fresh fish है तो again here salt penetration will be slower. So this depends upon the nature of the fish. Frozen and thawed fish में हमारा penetration faster होता है. Fatty fish, rigor fish में हमारा penetration slower होता है. But lean and rigor resolved fish में penetration salt का जो है वो हमारा faster होता है. Again fresh fish अगर हम ले रहे हैं तो penetration will be slower. So this depends upon the nature of the fish. Now fish size and dressing, it also affects the salting process. Salting time can be considered as a recipe. Salting time जो है it depends upon the specific area. अगर एक होल फिश है उसके ऊपर में हमने सॉल्ट डाल दिया और सेम 1 kg का फिश है उसको हमने स्टिक फॉर्म कर दिया या फिलेट फॉर्म कर दिया, उस पे सॉल्ट अप्लाई किया, किस तरह के फिश में फास्टर रेट ऑफ सॉल्ट पेनिट्रेशन होगा और सॉल्टिंग टाइम हमारा कम होगा? बताओ. हेलो. एक होल फिश है और एक हमारा फिलेट वाला में सर. फिलेट वाला में हमारा फास्टर रेट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा और सॉल्टिंग टाइम हमारा कम लगेगा. व्हाई? बिकॉज जो एरिया सरफेस एरिया को हम इंक्रीज कर रहे हैं, the more the surface area, more the penetration of salt. Then again thickness of the fish is another factor. Thicker the fish, lesser the penetration of salt. Thinner the fish, so more the penetration of salt. Then skin scale, these are a barrier to salt penetration. इसीलिए हमें स्किन को हटाना चाहिए, स्केल को हटा देंगे या फिलेट अगर हम फॉर्म करेंगे तो अगेन इट में इनहेंस द इंक्रीज द सॉल्ट पेनिट्रेशन. ठीक है. सो दिस इज द फिश साइज एंड ड्रेसिंग. बड़ा साइज होगा तो स्लोअर रेट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा. अगर सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फास्टर रेट ऑफ सॉल्ट पेनिट्रेशन होगा. अगर फिश थिकर है तो अगेन लेस पेनिट्रेशन होगा, अगर थिनर है तो मोर पेनिट्रेशन होगा. स्किन स्केल जो है अगर वो रहेंगे तो इट विल एक्ट एज अ बैरियर टू सॉल्ट पेनिट्रेशन. दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव स्किन स्केल, एंड इफ वी आर डूइंग अ फिलेटिंग और स्टिकिंग डेफिनेटली इट मे enhance or increase the salt penetration. So these are the some factor. Then salt concentration in the brine, जो brine हम बनाते हैं, if the salt concentration in the brine is more, that means greater the concentration of salt in the brine, faster the penetration of salt to the product.
जो ब्राइन बना रहे हैं उसमें अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन का सॉल्ट है तो हमारा salt penetration to the fish or to the product will be faster. So it depends upon the salt concentration. ज्यादा salt concentration होगा faster rate of penetration होगा, कम salt concentration होगा तो slower rate of penetration of salt होगा. Okay. Then temperature is another factor. If we are increasing the temperature, so it may also increase the salt penetration. अगर हम सॉल्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं मछली में और टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो सॉल्ट का पेनिट्रेशन हमारा फिश में बढ़ जाएगा. दैट में आल्सो इंक्रीज द salt penetration into the fish, but again here we will face a problem of spoilage. If we are increasing temperature, what will happen? Our fish will spoil. So we have to take care. We don't have to increase the temperature, but factor is there. If we are increasing the temperature, salt penetration will be faster. So because of this spoilage, we don't have to increase the temperature. Okay? Otherwise our fish will spoil. Then okay, this abhi jo covered kiya, that was the factor which affects the sorting process and quality of the product. Now second topic is the type of salted fish. Okay, so this type of salted fish based on the quantity of salt used, jitna salt hum use kar rahe hain, based on that salted fish classified into three groups: light salted, medium salted, heavily salted. Light salted, what we are doing in case of light salted, here 60 to 20 parts of salts per 100 parts of fish. Means what? $60 to 20 parts of salt per 100 parts of fish. Means what? 1/5. Huh? बोलो. 20%, sir. Anyone? कोई बोल नहीं रहा है यार, बोलो. $60-20 parts of salt per 100 parts of fish means what? 100 ग्राम का फिश रहेगा तो सर 20 ग्राम 16 ग्राम यूज करेंगे सॉल्ट. अच्छा ठीक है, एग्री. इसका मतलब ये 100 ग्राम हुआ, का फिश रहेगा सर तो 16 to 20 ग्राम सॉल्ट यूज करेंगे. इसका मतलब ये हुआ, जो फॉर एग्जांपल 100 केजी फिश है, 100 केजी फिश के लिए हमको 16 से 20 केजी हम सॉल्ट डालेंगे. दैट इज लाइट सॉल्टेड. जो उस तरह का सॉल्टिंग करेंगे उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में हमारा सॉल्ट का कंसेंट्रेशन होगा 20 to 30% on dry weight basis, not wet weight basis, on dry weight basis. Again in medium salted fish, here we are using 20 to 80 parts of salts per 100 parts of fish. That means 100 kg fish के लिए 20 to 28 kg salt we have to use. And जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, उसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 30 to 40% होगा on dry weight basis. Then heavily salted, here 30 to 34 parts of salt per 100 parts of fish. That means 100 kg fish के लिए 30 से 34 kg हमारा सॉल्ट चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन on dry weight basis will be 40 to 45%. So these are the three types of salted fish based on the quantity of salt used. कितना salt हम use कर रहे हैं salted fish बनाने के लिए, based on that it has been grouped into three: light salted, medium salted and heavily salted. Okay, understood? Yes sir. Okay, now this two is important. Means one salted product are salt boiled fish, pin down.
most commonly come in competitive exam. Pindang in Indonesia. Pindang is a salt boiled fish. Then fish wood, ikan kaju. Fish wood, ikan kaju, that is also a salted fish and salted fish product of Indonesia. Pindang and fish wood, ikan kaju. These two you have to remember, most commonly come in competitive exam. Okay. Now coming to the spoilage. If we are doing a salting, after salting or during the salting, our fish will spoil. So how this spoilage is occurring and what kind of spoilage generally occur in our fish salted fish product? So जो fresh fish होते हैं, जो fresh fish और means if we are not applying a salt, so generally fresh fish spoilage is basically due to the halophobic bacteria. Halophobic bacteria. So this halophobic bacteria generally don't grow if the salt concentration is more than 6%. Spoilage of salted fish is generally due to the action of halophilic bacteria or molds. Fresh fish generally halophobic. Salted fish में जो spoilage हो रहा है, that is because of halophilic bacteria or molds. That means these halophilic bacteria or molds may grow in an environment of high salt concentration and changes occurring in the protein, fat, etc. So salted fish may due to halophilic bacteria or mold, और जो fresh fish spoilage होता है that is because of halophobic bacteria. Then generally two groups of spoilage is there that we are fishing in our salted fish. One is microbial spoilage, another one is non-microbial spoilage. Microbial spoilage is this pink or red spoilage, molds, dung spoilage, saponification, putrefaction spoilage. These four comes under the microbial spoilage. Then non-microbial spoilage, infestation by maggot, then rust, white spot, then fragmentation. These four are under the non-microbial spoilage. That means here no microbes are playing a role in a spoilage, but here all these in all the four microbes is playing a role and microbes are involved in a spoilage. That's why it is under the microbial spoilage. Here no microbes is involved. That's why it is under the non-microbial spoilage. We will go one by one. This microbial spoilage, pink or red spoilage. So it is a common type of spoilage generally associated with salted fish, manifesting mostly during during storage in warm weather. During the warm weather जब रहेंगे summer के season में, that times pink or red spoilage we will fish in the salted fish. So इसमें क्या होता है, जो मछली है, मछली जो salted fish है हमारा, salted fish के ऊपर में जो है हेलोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, ग्रो हो जाता है. ग्रो होकर के वो उस पे अपना कॉलोनी डेवलप करता है और कवर होकर के वो रेड स्लाइम बनाता है. जो कॉलोनी बना करके ऊपर से रेड स्लाइम कवर कर लेता है. वो जो रेड स्लाइम बनता है that will give a unpleasant odor. थोड़ा बदबू टाइप का वो मीन्स स्मेल आते रहेगा. That is because of the halophilic bacterial colony that develops on the surface of the salted fish. So what are the halophilic bacteria that develops pink or red colony on the surface of the salted fish? That is Halobacterium salinaria, Halobacterium cutirubum, Sarcina morhi, Sarcina litoralis, and Micrococcus rogens. You have to remember all these bacteria because most commonly it comes most commonly in your competitive exam. Pink or red spoilage is due to which kind of bacteria? So that you have to remember.
Halobacterium salinaria, Halobacterium cutirubum, Sarcina morae, Sarcina littoralis, then Micrococcus rogens. These halophilic bacteria are aerobic and thermophilic in nature. So if these pink or red spoilage we are fishing in the salted fish, then how we have to treat? So treatment is that formaldehyde or sulfur dioxide vapor we have to use. We have to apply a vapor of sulfur dioxide or formaldehyde, or we can do dipping in a solution of sodium metabisulfite. We have to dip the product into the solution of sodium metabisulfite. So it can prevent the pink or red spoilage in the salted fish. Okay. Now, second is the mold or dun spoilage. So this mold or dun spoilage, dun is a type of mold development observed in a heavily salted fish. Heavily salted fish. That means here also again halophilic molds, not a bacteria. Halophilic molds is there. If halophilic mold is developed on the surface of the salted fish, it may appear as a colored spot, black, gray or brown. इस तरह का वो स्पॉट हमके हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में वो दिखेगा. And especially on the fleshy side of the fish, जो फ्लेश का जो रीजन होगा उधर थोड़ा ज्यादा रहता है. And this is caused by halophilic mold that is called as Spirandonoma epizoum. Spirandonoma epizoum. Don't forget, this is important. Mold or dun spoilage is caused by halophilic mold, Spirandonoma epizoum. Okay. How we can control? Can be controlled by using a good quality salt, maintenance of low temperature and humidity, well ventilated and dry storage condition. So this condition we have to provide during the storage. Or we can dip into 0.1% sorbic acid. So we can prevent the mold or dun spoilage. Okay. Then saponification, it is again microbial spoilage. So this damage caused by aerobic microorganism, we can identify by malodorous slime on the surface of the fish. जो salted fish है उसके ऊपर में malodorous slime will be formed. So if malodorous slime is forming, that is the saponification. So how we can prevent? To prevent this, fish can be kept in brine containing vinegar for some time before boxing. So we can keep into the brine, and that brine containing a vinegar. So we have to dip into that. Okay? Now putrefactive spoilage, how it is happening if the salting process is very slow. अगर salting process slow है तब हमारा क्या है, putrefactive spoilage होता है. इसमें क्या होता है, salting process अगर हमारा slow है तो जनरली जो भी हम salt अप्लाई कर रहे हैं वो salt हमारा अल्टीमेटली जो सेंटर ऑफ द फिश होता है, जहां तक वो salt पहुंचना है वहां तक पहुंचने में उसको समय लगता है. जो समय लग रहा है उतना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाता है. सो दैट इज द बिकॉज ऑफ द putrefactive spoilage. Generally it occurs if the salting process is very slow and it takes long time to reach the center of the fish to saturate it. So this can lead to putrefactive process in such region. तो अगर salt नहीं पहुंच पाएगा center of the meat या center of the fish, so there putrefactive spoilage will occur. That's why we have to enhance the salting process. अगर salting process increase करेंगे तो हमें putrefactive spoilage नहीं होगा. Now non-microbial spoilage, infestation by maggots. First one is the infestation by maggot. So infestation by fly is very common. हम गांव घर में भी देखते होंगे, अगर कुछ भी चीज लोग ड्राइंग करते हैं तो सडनली वेदर खराब हो जाता है, सनलाइट नहीं आ रहा है, तो हम उसको क्या अगर ऐसे ही रखते हैं उस पे आकर के फ्लाई घूमने लगते हैं.
And this is a very common and serious problem faced by salted fish trader. And generally it takes place during the early stage of drying. That means फाइनल ड्राइंग से नहीं, उस ड्राइंग के प्रोसेस में ही वो आकर के अटैक करता है. So generally this cheese flies, this is also important, most commonly come in competitive exam. Cheese fly, Drosophila keshi, maggot infestation जो होता है salted fish में, that is because of the cheese fly, Drosophila keshi. How we can treat? Brine treatment is there, washing with fresh water. So these are the treatment. Then rust spoilage or fat oxidation. So appearance of color similar to rustic iron, जैसे जंग लगता है ना आयरन में, like that you will see on salted fish there will be a rust, जैसे जंग लगता है ना आयरन में उस तरह का formation, means spot formation होगा. And this is basic, this is mainly on the fatty fish. जो fatty fish होते हैं उस पे ज्यादा होता है, because there is a oxidation of fat. How we can prevent? We can use the antioxidant to prevent rust formation. Then white spots occurs on the surface of the salted fish, which consists of a crystal of disodium hydrogen phosphate. This is important, most commonly come in competitive exam. Disodium hydrogen phosphate की वजह से white spot formation होता है हमारा salted fish में. And this disodium hydrogen phosphate basically derived from enzymatic breakdown of nucleotides. जब हमारे enzymatic breakdown होता है nucleotides का, from that times this disodium hydrogen phosphate form and it may appears on the surface of the salted fish and it may cause white spot formation. Then fragmentation, जो cured fish होते हैं, dried fish होते हैं, वो पहले से brittle होते हैं and it breaks during the storage because there is a dried product, salted and dried product is there. So during at the time of transportation or distribution वो क्या होते हैं, because of the fragile nature this cured and dried fish will be break. So that's why it is called है. जब हमारा अनलोडिंग होगा प्रोडक्ट तो उस टाइम में देखेंगे अरे हमारा प्रोडक्ट तो बहुत सारे टूट गया. कोई भी चीज ज्यादा ड्राई हो जाता है तो डेफिनेटली इट मे कॉज ब्रेकेज, it may lead to break. And this is also due to denaturation of the protein. So these all are the non-microbial spoilage. That's all today topic. अभी किसी को confusion है तो you may ask. आज हमने पढ़ा factor affecting salting process and quality of the product. दूसरा हमने पढ़ा type of salted fish. तीसरा हमने पढ़ा spoilage of salted fish. इस तीनों में अगर कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं. साल्टिंग के बाद सर ड्राइंग करना जरूरी है? करेंगे ना, सॉल्टिंग के बाद ड्राइंग करेंगे. सर फ्रेगमेंटेशन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं सर? फ्रेगमेंटेशन को बचाने के लिए हमें एक तो हमारा जो कंटेनर हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैकेजिंग मटेरियल हमें थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा जो हमारे प्रोडक्ट को मींस तोड़ने से बचाए. सर या फिर एयर टाइट कर सकते हैं सर, ये एयर फील्ड सर? हाँ कर सकते हैं ना. अल्टीमेटली हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट टूटना नहीं चाहिए, तो मेन हमारा जो रोल यहाँ पे है पैकेजिंग मटेरियल का है. तो पैकेजिंग मटेरियल ऐसा रखें जो हमारे प्रोडक्ट को डैमेज ना करे, थोड़ा हार्ड रोबस्ट पैकेजिंग मटेरियल जो प्रोडक्ट को हमें बचाए फ्रेगमेंटेशन से. यस सर. और कुछ? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं?
No, sir. So shall I close? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, Thank you, sir. sir. Hmm. Thank you, sir.